So welcome back. We were discussing about cohesion, tension, transpirational pull model. In the last video, we have already seen the structure of stromata. Now in this video, we will discuss how this water will get ascend into the vascular bundle with the help of transpirational pull. This transpirational driven ascent of swab inside the xylem is actually depends on the three main physical properties of water. ये जो कुछ भी ट्रांसपिरेशन के कारण असेंट ऑफ स्वैब हो रहा है प्लांट के वस्कुलर बंडल में, ये बेसिकली डिपेंड करता है वाटर के फिजिकल तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर. द थ्री मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर number 1 cohesion, number 2 adhesion, and number 3 surface tension. Cohesion is actually a mutual attraction between the water molecules. Actually, cohesion is the force of attraction between same molecule. As we are speaking about the water, so cohesion is a mutual attraction between water molecules. So due to this cohesion force, the water molecule will have tendency to stick together. By speaking about the adhesion, adhesion is the force of attraction between two different molecules. In this case, the water molecule is having the attraction with the tracheary surface. Okay, the tracheary surface is a polar surface, and the water molecule will have the attraction force towards this polar surface. So, if we speak about the tracheary elements, that is tracheids and vessels. So this tracheids or vessel will have the water, and these are the molecules of water which are joined together and they are having the mutual attraction with each other. So this force which is binding the water molecule with each other is called as cohesion. But the water molecule will also have the attraction for this polar surface of tracheid vessel. Okay, so this is a cell wall of tracheary element, that is tracheid or vessel, and the water molecule will have the force of attraction with this surface. So naturally the water molecule will have tendency to stick to this surface of tracheary element. This force which is sticking the water molecule with the tracheary element is actually called as adhesion. So adhesion is attraction between different molecules. Okay, say for example water and the polar surface of tracheary element. Now speaking about the surface tension is the ability of water to stick together more in the liquid phase comparatively a gaseous phase. Okay, so water molecule will always have a tendency to stick together in a liquid phase compared to a gaseous phase. This type of attraction is called as surface tension. So we can write water molecule stick together in liquid phase more than in gaseous phase.
This force of attraction between the water molecule in liquid phase is called as surface tension. Now these three physical properties of water will provide two important qualities to water molecule. They provide the water molecule with tensile strength. Okay, due to this physical property, the water will get a very high tensile strength. This tensile strength is actually a power to resist the breaking force which is created due to pulling force of transpiration. So a force resisting the pulling force of transpiration is actually a tensile strength. This tensile strength provides a resistance to the pulling effect of transpiration. जब भी transpiration के कारण pulling effect आएगा water molecule पे, तो due to high tensile strength, water molecule will resist this transpirational pull. Okay, and second is the capillarity. This is the ability of liquid to rise under a tube of very small diameter. So trochanteric element is having a very small diameter. We have already learned this concept in case of physics. If we take a beaker and put two tubes inside the beaker, one tube with a greater diameter and second tube with a lesser diameter. So this is a tube which is having a greater diameter, and this is the tube which is having a lesser diameter. And if we fill the beaker with a liquid, then the water will rise in the tubes. This rising of water in the tube is called as capillarity, but the lower the diameter of vessel, the greater rise you will see in the tube. Okay, so a wider diameter vessel will show you water level at lower place, and a lower diameter vessel will show you a rise of water level up to a higher level. क्लियर. सो लोअर द वेसल, जितना वेसल का डायमीटर कम रहेगा उतना ज़्यादा वाटर का कॉलम उस वेसल में बढ़ेगा. ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलैरिटी, और इस कैपिलैरिटी के वजह से भी वाटर मूव होने में, असेंट ऑफ स्वैप होने में हमें मदद मिलेगी. हमने अब तक देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल एक में के साथ स्टिक टुगेदर है ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहिजन. वाटर के मॉलिक्यूल कीड के सेल वॉल से स्टिक टुगेदर है ड्यू टू द फोर्स ऑफ एडेशन. एंड वाटर के मॉलिक्यूल में लिक्विड कंडीशन में ज़्यादा सरफेस टेंशन है कंपेयर टू गैसियस स्टेज. नाउ दिस वाटर विल राइज इनसाइड द ट्रकियरी एलिमेंट ड्यू टू कैपिलैरिटी, as this trochanteric element is having very small diameter, and as the transpiration pull is pulling the water molecule, the surface tension of water molecule will bring them together. Okay, as the water will move upward in the trochanteric element, so molecule by molecule the water will get upside like this, and ultimately it will get lost by the transpiration pull. But as this molecule will move outside, this molecule will bring another molecule at its place. This is due to the high tensile strength. The tensile strength will resist the breaking of the chain in water molecule. Tensile strength की वजह से water molecule की chain ये break नहीं होगी. जैसे ही एक water vapor का molecule बाहर निकल जाएगा, दूसरा उसकी जगह ले लेगा. Clear? If we can magnify this diagram, if we can take a cut section at this level, we can visualize कि this is a upper epidermis and this one is the lower epidermis, and this is a vascular bundle. What we are visualizing here is a vascular bundle, and the upper epidermis will have, in case of dicot leaf, the palisade mesophyll. So these are the cells of palisade mesophyll,
and then we are having some spongy mesophyll, which are the photosynthetic cells, and on lower epidermis we are having the stomata. These are the guard cells. And inside the vascular bundle we are having xylem here, and here is the phloem. In the xylem the water is reached, okay, here. So here there is water, and this water will move into the space which is filled by the mesophyll cell, and this water will also get out from the stomata. हमने ऐसा कहा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी के कारण जो पानी है वो जाइलम तक आ चुका है। अब जाइलम से पानी ये लीफ में जाएगा। लीफ में यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है और उनकी जो पेरी सेलुलर स्पेस है उसमें वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाएगी। बाहर के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स कम है, ह्यूमिडिटी कम है, और अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो नेचुरली द वाटर वेपर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए ड्राइड सीजन में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। जैसे ही स्टोमेटा से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर बाहर निकलेगा, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। ऐसे करते करते ये जो पूरे वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में मदद करेंगे और इस वाटर वेपर की कमी पूरी करने के लिए जाइलम से वाटर जो है वो मूव आउट होगा इनटू अ पेरीमेसोफिलर स्पेस। सो ऐसे करते वक्त कंटिन्यूअस वाटर चैनल ट्रांसपिरेशन एक साइड में होते रहेगा, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकलते रहेगा और उसकी जगह लेने के लिए यहाँ से जाइलरी वेसल्स में से पानी कंटिन्यूअसली आते रहेगा। सो ये जितनी सिंपल प्रोसेस दिखती है, एक सिंपल सी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन पुल, फिर भी इस प्रोसेस के कारण द प्लांट इज एबल टू राइज द वाटर अप टू द हाइट ऑफ 130 मीटर। इतने सिंपल प्रोसेस के बावजूद भी प्लांट इज एबल टू राइज द वाटर कॉलम विद द साइज ऑफ xylary vessels up to the height of 130 meters। सो एक जाइलम साइज की वेसल में हम वाटर कॉलम को कहाँ तक उठा सकते हैं, तो 130 मीटर तक भी उठा सकते हैं ड्यू टू दिस सिंपल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। इसी तरीके से वाटर ये कंटिन्यूअसली एब्सॉर्ब होते रहेगा प्लांट में और 1% वाटर सिर्फ यूटिलाइज होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ। रेस्ट ऑल द वाटर विल गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट द cohesion, tension, transpiration pull model. This is the main force which will help in the ascent of swab. Now in the next video we will compare the transpiration process and the photosynthesis. Thank you.